In nuclear physics, first of all, you have a, और मैं थोड़ा जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सेट करके रखता हूँ क्योंकि डाटा देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको मैं okay. So first of all, you know that there is a relation between mass number. So the symbol of a nucleus is represented by XZA. It is the symbol of a nucleus. Z is atomic number, A is the mass number. Mass number means total number of nucleon. ठीक है ना? The radius of a nucleus is varies with mass number. That is R naught a the power 1/3. यानी हर एक न्यूक्लियस का जो है रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगा, मास नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि दो न्यूक्लियस है, दोनों का मास नंबर गिवन है। एक का मास नंबर है 264 और सॉरी 216 और दूसरे का है 264। दो न्यूक्लियस है, दोनों का मास नंबर, एक का 216 है, दूसरे का 64 है। तो उनका रेडियस का रेशियो क्या है, ये निकालना पड़ेगा। बताओ क्या होगा। So you know, so R1 by R2, that will be how much? A1 by A2 की power 1/3, ठीक है ना। A1 is how much? 216, A2 is 64, right? की power 1/3। तो ये बेसिकली है 216 मीन्स 6 की पावर क्यूब, राइट, और 64 मीन्स 4 की पावर क्यूब की पावर 1/3। तो देखो ये बेसिकली 6/4 है, यानी 3:2, ठीक है। सो रेडियस एंड मास नंबर हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो इफ यू सी बाइंडिंग एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल the binding energy per nucleon, total binding energy of a nucleus divided by its mass number. This is called binding energy per nucleon. And binding energy per nucleon is of the order of mega electron volt for nucleus. If you see that binding energy per nucleon, it is actually varying with mass number. See that plot, it is like that. So initially, if for low mass number nuclei, the binding energy per nucleon is less, ठीक है। Then if you see that especially mass number less than 30, binding energy per nucleon less, and beyond mass number or 20, for both side binding energy per nucleon less, so they are basically relatively low stable, ठीक है। In between mass number, those nuclei have mass number in between 30 to 120, they are highly stable. So इस साइड वाला न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है, इस साइड वाला भी अनस्टेबल। So light nuclei, they are basically unstable. So in this side, that nuclei they are locating, they will undergo nuclear fusion. And this side, they will undergo nuclear fission. Both case में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है, दैट इज फॉर आयरन। आयरन का जो होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाईएस्ट होती है, ठीक है, iron 2656. The binding energy value is for iron, binding energy per nucleon is around 8.6 mega electron volt. This is binding energy per nucleon. Means total binding energy, if you calculate, then it will be 56 into 8.6 mega electron volt. That is the total binding energy. But binding energy per nucleon, how it is significant, because binding energy per nucleon will tell you the relative stability.
तो इस साइड जो है आपका बाइंडिंग एनर्जी कम है, इस साइड कम है, तो दे विल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन एंड दे विल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन. Both case energy will be released or absorbed. But in general, in nuclear reaction, how we'll understand whether there will be release of energy or absorbed by energy. That is, you can understand from the concept of Q value. Q value means what? If you have a nuclear reaction, ये बड़ा important है. If you have a nuclear reaction, A nucleus is uh, interacting with B nucleus and producing C and D two nucleus, and their mass if you write. So mass of A nucleus is Ma, mass of B nucleus is Mb, mass of C nucleus is Mc, mass of D nucleus is Md. So if you define in terms of kinetic energy, let us define kinetic energy of A nucleus is Kea, for B nucleus it is Keb, for C nucleus it is Kec, for D nucleus it is Ket. And binding energy of A nucleus is Bea, for D it is Beb, then for C it is Bec, for D it is Bet. So if you define that by Q value in terms of nuclear mass, so how will you define the Q value of this reaction? So that is mass of sum of the mass of the reactant minus mass of the product into C square. Okay. In terms of binding energy or kinetic energy, so for both case, this is binding energy of the product, sum of the binding energy of the product minus sum of the binding energy of the reactant. Okay, binding energy of the reactant. So if Q value is positive for any nuclear reaction, it means there will be release of energy. Release of energy. If it is negative, then to make this nuclear reaction, you have to supply that energy. So energy should be absorbed to make this process. So, but is light nucleus and heavy nucleus, for both case Q value क्या होती है basically पॉजिटिव होती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोडक्ट का होता है माइनस रिएक्टेंट का, दैट इज पॉजिटिव इन नेचर. फॉर बोथ केसेस देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी. बट इन जनरल बाइंडिंग एनर्जी, हाउ विल डिफाइन द बाइंडिंग एनर्जी? ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी की कैसे डिफाइन करोगे? तो सपोज यू हैव अ न्यूक्लियस एक्स जेड ए, दिस इज द न्यूक्लियस. सो you know that for stable nucleus, the actual nuclear mass means what? You know the composite of nucleus, it contains z number of protons and n number of neutrons. So what you are expecting, the mass of the nucleus, that should be sum of the mass of the product, sum of the mass of the proton. So it contains z protons, so z times mp plus sum of the mass of the neutron. But for any stable nucleus, this is known as predicted mass. Okay, so actual mass M NuCl will always be less than of its composite by an amount delta M. Okay, so for any stable nucleus, if you measure the mass, actual mass will be smaller than by its composite by an amount delta M. Okay, this is the composite mass. But अगर जैसे मेरा सपोज मान लो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ हूँ, 25 प्रोटॉन है, एज्यूम कर रहा हूँ 25 प्रोटॉन है मेरे अंदर, 25 न्यूट्रॉन है. सो यू आर एक्सपेक्टिंग मेरा मास जो होना चाहिए 25 न्यूट्रॉन का मास प्लस 25 प्रोटॉन का मास. बट जब एक्चुअली मेजर कर रहे हो मेरा मास, तो आपको क्या मिल रहा है? उससे कम मिल रहा है. दिस इज हैपेंस एक्चुअली in reality. So by an amount, how much? This is delta M, where delta M is called mass defect. So delta M is called mass defect. So delta M कैसे लिखोगे आप? ZMP plus NMN minus actual nuclear mass. This is known as mass defect. So binding energy, your job is to calculate binding energy. So binding energy is nothing but what? Mass defect times C square. This is known as binding energy. So it means binding energy that I can write that ZMP plus NMN minus actual nuclear mass. ठीक है?
इंटू सी स्क्वायर। अगर मैं इंटू क्या जाएगा का सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लो आपका एक हाइड्रोजन एटम है। सो हाइड्रोजन एटम मीन्स इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि this is the hydrogen atom, the mass of hydrogen atom is mh. The mass of hydrogen atom is mh. Can you tell me how much will be the binding energy of hydrogen nucleus? So of course, you know, listen to me. This is I'm telling the mass of hydrogen atom, not I'm telling mass of neutron. I'm giving you the mass of hydrogen atom, not mass of hydrogen nucleus. But here in the formula you have mass of the nucleus. So first, since they ask you to calculate the binding energy of this hydrogen atom in terms of mass of hydrogen atom. So how will do? Just I'll write that binding energy formula. So you know the binding energy formula. So binding energy formula में आप देखोगे प्रोटॉन कितना है इसमें actually. You see it contains this एक nucleus प्रोटॉन only one proton. So I can write this mp minus actual nuclear mass of hydrogen atom into c square. Now you have to calculate this in terms of mass of atom. So what I'll do, I'll add the mass of electron and then I'll subtract the mass of electron. Okay, so you can see I have added the mass of the electron. You can see here I have subtracted into c square. ठीक है ना, देखो माइनस प्लस माइनस me plus me. अब now you can see this mass of nucleus. एक एटम का मास में क्या होती है, एक एटम में क्या होता है, एटम contain you have a nucleus and electron. So if you write the mass of the nucleus plus mass of the electron, that will give you what? एटम में क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है. If you write the mass of the nucleus plus mass of the electron, that is what actually? Tell me. This is known as mass of the hydrogen, mass of the atom. एटम में तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉनिक मास, दिस इज नोन एज मास ऑफ एटम. So for this case, this will be for hydrogen atom case, this is nothing but mass of hydrogen atom. So for hydrogen atom, I can write the binding energy will be mp plus me minus this, and this is nothing but mh or capital M, whatever they have given. ठीक है जी. अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम आया है, देखिए आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कार्बन, but they have modified the binding energy per nuclear carbon. So this is like 2, of course, this unit always MeV, then 4, then 6, then 8. And this side you have a mass number. And that curve they have given you like this. This is 20, 40, 20, 40. Then this is 80, 40, 80, and then like this. This is 120. मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कार्ब गिवन है और आपको बोला जा रहा है ये मास क्या है, दिस इज योर 200 मास नंबर. So they have modified the binding energy per nuclear carb.
It's like that. Up to mass number 20, binding energy is 2 MeV, binding energy per nucleon. Then in between 20 to 40, this is a 4, and so on. Now what they have said that एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 180, जिसका मास नंबर कितना है 180, इट अंडरगोज न्यूक्लियर फिजन। और आपको पता है न्यूक्लियर फिजन में क्या होती है, बड़ा मास नंबर ब्रेक होकर दो इंटरमीडिएट मास बनाता है, न्यूक्लियर मास बनाता है। इसमें बोला गया है कि एक मास नंबर 180 है। For that nucleus, binding energy per nucleon carb is provided, and said it is given that this nucleus undergo nuclear fission and it break into two equal intermediate nucleus. तो आपको पूछा गया है कि इन दिस प्रोसेस कितना अमाउंट इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज होंगे या एब्जॉर्ब होंगे। अगर रिलीज है तो कितना अमाउंट रिलीज है, या एब्जॉर्ब है तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, एक मास नंबर 180 ब्रेक होकर दो इक्वल इंटरमीडिएट मास बना रहा है। सो यू हैव टू टेल इन दिस प्रोसेस whether there will be release of energy or absorb in the energy. If absorb or release, how much the value that you have to tell. It's very easy, you know, that you have a mass parent decays to two daughter having equal mass. Now you can see from this given curve 180 कहाँ पर लाई करेगा, it will be here. तो अगर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो 180 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज एक्चुअली कितना है, देखो 4 है, दिस हाइट इज 4। टोटल मास नंबर कितना है 180 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा 180 into 4, दिस टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब प्रोडक्ट कितना है, अगर 180 है तो a/2 कितना है, डॉटर का जो मास नंबर बनेगा दोनों डॉटर का मास नंबर कितना है 90 है, और 90 कहाँ पर लाई कर रहा है, if you see in between on 80 and 120, so 90 will be here। और आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि दोनों डॉटर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 6 है। तो टोटल आपका देखोगे तो इसमें कितना है आपका a/2 मतलब 90 है, हर एक का बाइंडिंग एनर्जी 6 है, तो 90 into 6 again a/2 means 90 and for this case also 6। ठीक है, so this is if you calculate this will be 720 MeV, and this if you calculate it will be 1080 MeV। okay, so the binding energy is like that। now you know कैसे आप पता करोगे कि एनर्जी रिलीज होंगे एब्जॉर्ब होंगे, just you calculate binding energy of the product 1080 minus reactant 720 MeV। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 360 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, so it means there will be release of energy by how much amount 360 MeV। then you have a concept of nuclear force। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, so you know that nucleus, inside nucleus you have a protons neutrons, so this nucleus is stable because of nuclear force। एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे सिमिलर चार्ज है, देयर इज अ कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स, बट स्टिल न्यूक्लियर इज स्टेबल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जैसे काम करते तो न्यूट्रॉन के बीच में भी काम करते हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन का बीच में भी काम करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम करता है ना, और इतना ही है। तो इसमें से पता चल रहा है कि देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियस का साइज कितना है फेमटोमीटर में है, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ दो न्यूक्लियस के बीच में काम करती है, ठीक है, जब न्यूक्लियस के अंदर हो दो न्यूक्लियस, है ना। अगर दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस न्यूक्लियस की साइज यानी फेमटोमीटर 3-4 फेमटोमीटर होती है, 5 फेमटोमीटर मानो, उससे ज्यादा हो तो फिर न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है ना। so nuclear force between two nucleus will only act if the distance is like 3-4 femtometer। it means what I can say that nuclear force is what, this is short range, this is short range,
अगर दो न्यूक्लियस की रेंज मतलब दो न्यूक्लियस को उसके ज्यादा डिस्टेंस से रखोगे, रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच न्यूक्लियर फोर्स कैन एक्ट. If you keep two nucleons beyond the range, that will not act. But for nuclear force, it will only act in the range of femtometer. So that's why it is called short range. यहाँ से पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम कर रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम कर रहे हैं. तो यहाँ से पता चल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स इज व्हाट. दिस इज एक्चुअली क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम कर रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 सारे के बीच में काम कर रहा है. टू न्यूट्रॉन्स कैन attract by nuclear force, or neutron on proton can attract by nuclear force, on proton can attract. It means this is charge independent. Okay. Nuclear force is exchange. Nuclear force is exchange force. Why it is called exchange force? Because two nucleons experiencing nucleus, experiencing nuclear force by the exchange of pions. It's like I'm giving you example. Suppose me and you, we are playing catch. So I'm throwing a ball to you. You are catching. Again, you are throwing, and this is continuously happens from beginning to end up to the stability of the nucleus. Okay, so same two nucleus are actually exchanging this pi meson, some particle. So that's why it's called nuclear force is exchange force. Nuclear force is spin dependent. Why it is called spin dependent? So if you have you know that nucleons, each neutron and proton, they are basically fermion. न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ होती है, एक प्रोटॉन का भी हाफ. सो हर एक न्यूक्लियन क्या है, fermion है. So inside nucleus you have many nucleons are there. If two nucleons have spin, they are parallel, so nuclear force will be large. If two nucleons spin anti-parallel, okay, if two nucleons having spin anti-parallel, then nuclear force will be small. It means nuclear force is spin dependent, है ना. आपको पता है न्यूक्लियस का स्पिन हाफ होती है, देयर स्पिन हाफ पार्टिकल. So inside nucleons you have a inside nucleus you have a nucleons. If two nucleons have spin parallel, then nuclear force will be large. If two nucleons spin value anti-parallel, then nuclear force will be small. That's why it is called spin dependent. This is also called nuclear force is non-central. Why it is called non-central? Because this depends upon, nuclear force depends upon velocity also. You know, कोई force को central force तभी बोलती है जब क्या है, that depends upon position, only position, then that will be called central force. But nuclear force not only depends upon position but also depends upon velocity. So that's okay. If you see that nature of the plot of nuclear force, that is also important. So this is R along x-axis representing separation between two nucleons, and this side you have a force, nuclear force, Fn. The nature of the force is like this. So this nuclear force is negligible if you have a two nucleons having separation larger than 2.5 femtometer, and this force becomes repulsive if you have a two nucleons, they are at a distance of less than 0.8 femtometer. So, and this value, you know, this, in between 0.8 to 2.5, this side you have a negative value. Okay, this is 0. This, in between this, nuclear force is negative, means attracting. So, two nucleons cannot come closer than 0.8 femtometer. And if you have a two nucleons, they are away of 2.5 femtometer, then nuclear force cannot act. That's why it is called short range. And this is maximum if you have two nucleons at a distance of around 1 femtometer.
ठीक है, देन इट विल बी मैक्सिमम। तो ये सारे आपका क्वेश्चन में आ सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स का जो प्रॉपर्टीज है, जितना सारा डिस्कशन हुआ इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, एक चीज और है जो शायद आपका फ्यूचर में काम में आ सकते हैं, बट अभी भी अगर आप पूछा जाए कि रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल, जो एक्सचेंज हो रहा है पार्टिकल उसका मास के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल, सो दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आराम से कर सकते हो। रिसेंटली आया था सीएसआईआर नेट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। Well, so now next part. Okay, I'm not going to discuss in details of uh, of liquid drop model, but कुछ terms जो है मैं बता देता हूँ। So you know that according to liquid drop model, that binding energy of a nucleus can be calculated from 5 terms. So binding energy of a nucleus can have 5 terms. So one is called AVA. This is volume energy term. Then एस यदि पावर 2/3, सारे जरूरत नहीं है, बस आपको टर्म फर्स्ट 2-3 टर्म आपको जरूरत पड़ेगा। देन ए सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई यदि पावर 1/3, देन ए ऑफ ए माइनस 2z का स्क्वायर बाई ए एंड देन डेल्टा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज वॉल्यूम एनर्जी टर्म, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। सो binding energy, total volume energy is AVA. Okay, A means mass number, AV means volume coefficient. So अगर बोले आपको वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस कितना है, टोटल वॉल्यूम एनर्जी इज AVA. सो टोटल अगर बोले कि वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, दैट इज AV. AV इज कांस्टेंट वॉल्यूम एनर्जी कोएफिशिएंट। ठीक है, this is known as surface energy. Surface energy causes there is a decrement in the binding energy, that's why there's a minus sign. Plus means increment, minus means decrement. So total surface energy of a nucleus is AS at the power 2/3. AS is surface coefficient. So this is your surface energy term. So total surface energy is AS at the power 2/3. So surface energy per nucleon agar bole, total surface energy is AS at the power 2/3. Surface energy per nucleus means you have to divide by mass number. Then surface energy per nucleus, that will be what? That will be proportional to, I can write, that will be proportional to minus a the power minus 1/3. Total surface energy is a the power 2/3. But if you divide by mass number, then that depends upon mass number by power minus 1/3. This is known as Coulomb energy. Coulomb energy causes there is a decrement in the energy. This is known as asymmetric energy. तो ये 3 टर्म आपके लिए जरूरत है, बाकी CSIR नेट के लिए। This is known as asymmetric energy. And this is called pairing energy. Okay, so first 3 terms we have to keep in mind. Okay, so total volume energy proportional to mass number. If you divide by if you calculate mass total volume energy per nucleon, then you have to divide that, that will be independent on mass number. And you can same you can apply for surface energy and Coulomb energy also. Now the main part जहां से आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है, that is radioactivity. Radioactivity. You know that phenomena of so you have a few nucleus exist. Okay, they are unstable, so they undergoes alpha or beta or gamma emission to achieve the stability. So this phenomena is known as radioactivity. Okay, so if you have a nucleus is undergoing radioactivity as converting to B parent nucleus.
So at time t equals to 0, you have a n naught number of parent nucleus, and there's no daughter nucleus. At time t equals to t, so initially at t equals to 0, you have n naught number of parent nucleus A, there's no daughter nucleus. At time t equals to t, you have a nt number of parent nucleus, and you have a n naught minus nt number of daughter nucleus. So nt means number of undecayed parent nucleus after time t. So number of undecayed parent nucleus after time t, that can be written as initial number of nucleus minus lambda into t, where lambda is called decay constant, and decay constant lambda is actually 0.693 by t half. T half means half life of a nucleus. So T half means what? Time during which half of the nucleus will be decayed. Sorry, half of the nucleus will be undecayed. I mean, NT का value कितना है? N naught by 2. Half of the nucleus will be undecayed. So initially you have a N naught number of nucleus. After time T or T half, the number of undecayed nucleus NT will become N naught by 2. So half life is related to decay constant is related to half life. और एक आपका एक और फॉर्मूला है, जैसे आपका decay constant lambda is inversely proportional to mean life of radioactivity. So tau is mean life here, and t half means half life. Another is activity of your sample. So activity A is nothing but rate of decay, mod of minus dn by dt. So minus dn by dt means rate of decay. So activity of a sample after time t is also exponentially decaying. So activity at is a naught to the power minus lambda t, where a naught is known as initial activity, and that is n naught lambda. This is known as initial activity.